औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will discuss physical vapor deposition of inorganic material chemistry, and the course code is 3115. Physical vapor deposition. The key concept of this topic, physical vapor deposition, are thin film, synthesis of thin films, what is vapor deposition, why vapor deposition, techniques or method for vapor deposition, then how does vapor deposition, physical vapor deposition work, morphology of PVD. PVD mean physical vapor deposition, types of deposition, cathodic arc deposition, electron beam deposition, evaporative deposition, pulse laser deposition, sputter deposition, advantages and disadvantages of PVD coatings, and in the last, application. And now, what is thin films? Thin film are thin material layers ranging from fractions of a nanometer monolayer to several micrometer in thickness. Clear? And now, synthesis of thin film. Thin film deposition, it is synthesis by two methods: physical deposition and chemical deposition. Physical deposition involve evaporation, which is physical vapor deposition, and sputtering. And in case of chemical deposition, we have chemical vapor deposition, CVD, atomic layer deposition, ALD. And now, what is vapor deposition, or simply deposition? The direct solidification of a vapor by cooling. The reverse of sublimation means reverse of sublimation is deposition. Change of state from a gas to a solid is not a very common phase change, but is referred to as deposition. Applying a thin film on a surface ranges from nanometers to micrometer. Thin film is deposited on substrate. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो मेटल है, जो आपका टारगेट है,
वो आएगा वेपर फॉर्म में and then deposit on the substrate. Is it clear? And now, why vapor deposition? Vapor deposition is a coating technique involving transfer of material on an atomic level, mean atom to atom. It is used for improved hardness and resistance, reduce friction, improved oxidation resistance, components to operate in special environments. And now, what are different techniques or methods for vapor deposition? There are different techniques used for deposition, like physical vapor deposition, chemical vapor deposition, sputtering, electroplating, and coating. Physical vapor deposition, it is fundamentally a vaporization coating technique involving transfer of material on an atomic level. It is an alternative process of electroplating. The process is similar to chemical vapor deposition, except that the raw material or precursor is going to be deposited, start out in solid form, whereas in CVD the precursor are introduced to the reaction chamber in the gaseous state. Deposition of a material in the vapor phase onto a solid in a vacuum. The coating method involves purely physical processes such as high temperature vacuum evaporation with subsequent condensation or plasma sputter bombardment. Evaporated atom travel through the evacuated space between the source and the sample and stick to the sample. Usually no chemical reaction take place. PVD is carried out in a vacuum atmosphere. It is used for thin and uniform coating or films. Evaporation rely on thermal energy supplied to the crucible or pot. Electrical resistance or electrical beam can be used as source of heat. Source material melts and evaporizes, which is then deposited on the substrate placed directly above. A shield is usually provided between source metal and substrate. Physical coating process involve condensation and evaporation of material. This is the schematic diagram of evaporation equipment. जैसा कि इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये वैक्यूम सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. ये बॉट है या क्रूसिबल. इसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं.
जो टारगेट आपका है सोर्स मटेरियल, क्रूसिबल को एक हीटर रेजिस्टेंस और बीम के ऊपर रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम के जरिए वो हम उसको हीट अप करते हैं और उसमें से जो वेपर्स निकलेंगे उनके सामने डायरेक्ट हमने वेफर होल्डर के ऊपर वेफर या सबस्ट्रेट रखा हुआ है, वो उसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। सो इट इज अ सिंपल डायग्राम। Precautions in PVD. It is used for high melting point and low vapor pressure material. PVD is carried out at high temperature and vacuum. In contrary to PVD, CVD is a method in which chemical adhesion or chemical deposition occur. And history of PVD. Michael Faraday used PVD in 1838. How does PVD work? PVD processes are carried out under vacuum conditions. The process involved 4 steps: evaporation, transportation, reaction and deposition. Step 1, evaporation. During this stage, a target consisting of the material to be deposited is bombarded by a high energy source such as a beam of electron or ions and vaporizing them. Evaporation involves 2 basic processes: evaporate, condense. Mean evaporation and condensation. Evaporant condenses on and is absorbed by the surface. Any evaporation system includes a vacuum pump. It also includes an energy source that evaporates the material to be deposited. Step in evaporation deposition. Load the source material to be deposited, mean evaporant, into the container, crucible or bath. Heat the source to high temperature. Source material evaporates. Evaporant vapor transports to an impegan on the surface or of the substrate. Step 2, transportation. This process simply consists of the movement of vaporized atoms from the target to the substrate to be coated and will generally be a straight line affair. Step 3, reaction. In some cases, coatings will consist of metal oxides, nitrides, carbides and other such materials. In these cases, the target will consist of the metal. The atoms of metal will then react with the appropriate gas during the transport stage. For the above examples, the reactive gases may be oxygen, nitrogen and methane.
in instances where the coating consists of the target material alone, this step would not be part of the process. And the last step is deposition. This is the process of coating built up on the substrate surface. Depending on the actual process, some reactions between target materials and the reactive gases may also take place at the substrate surface simultaneously with the deposition process. And this is a summary of steps involved in PVD. First of all, condensed phase, solid or liquid, then it is evaporated, mean evaporation, it goes into gas phase, then gas phase is transported, transportation step, then reaction and deposition mean condensation, and we get condensed phase, usually solid. This is the whole summary of PVD. Now, morphology of PVD. High temperature is required to vaporize the material. Vacuum of different ranges is used, which depends on the mean free path required in the system. Types of deposition: cathodic arc deposition, electron beam deposition, evaporative deposition, pulse laser deposition, and last one, sputter deposition. And now we discuss one by one. First, cathodic arc deposition, in which a high power arc directed at the target material blasts away some into highly ionized vapor. The most important is, in this process, ions are deposited on the substrate. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, जो नीचे डायग्राम है, इसमें आपका ये टारगेट मटेरियल है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट। जब यहाँ से आपको जो आर्क प्रोवाइड किया जाता है, तो जो आपकी इसमें गैस है जो वैक्यूम के अंदर वो आर्गन है, उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, निकालेगा और वो AR प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। और ये पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं, ये मेटल जो आपका टारगेट जो है उसके साथ टकराते हैं और वहां से मेटल के जो आयंस हैं उनको वो निकालता है और वो आयन जाकर जो आपका सबस्ट्रेट है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। सो आयंस आर डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट। और इसी तरह इसके अंदर ये पंपिंग यूनिट है जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डेपोजिशन। जैसा कि इसमें नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट या इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको हम यूज करेंगे टू हीट द मटेरियल, टारगेट मटेरियल, in which the material to be deposited is heated to a high vapor pressure by electron bombardment in high vacuum. Electron beam is generated by tungsten filament. Material is placed in graphite or tungsten crucible. Deposition mechanism
is same. Deposition is carried out under high vacuum. Deposition is controlled and uniform. जितनी भी आपकी इसमें डेपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी. एटॉमिक लेवल, एक एटम के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, यूं एक आपके पास लेयर जो आएगी वो यूनिफॉर्म होगी. एंड नेक्स्ट इज इवेपोरेटिव डेपोजिशन, in which the material to be deposited is heated to a high vapor pressure by electrically resistive heating in high vacuum. Vacuum is most important in physical vapor deposition. Resistive heating method is used. Deposition is performed at high temperature and low vacuum. Vacuum decreases the content of contamination. Voltage and current is manually controlled. Material is kept in boards. ये आपके सामने डायग्राम है. यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर आपका मटेरियल है, इसको आपने हीट करना है तो यहाँ से जो वेपर्स आएंगे वो इस आपकी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और ये वैक्यूम आपने इसको प्रोवाइड किया गया है और ये आपके इवेपोरेटेड मटेरियल जो वेपर्स की फॉर्म में है ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ये भी सेम वही डायग्राम है कि ये आपके यहाँ पे इसमें ये क्रूसिबल या बोट है, ये दूसरा ये बाहर ये आपका इवेपोरेशन इक्विपमेंट है, इवेपोरेशन मटेरियल, और इसको आपने इलेक्ट्रॉन बीम से हीट किया और या तो ये वैक्यूम आपने इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है. यहाँ से आपका इवेपोरेशन फ्लो या आपके वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये सबस्ट्रेट हीटर है और ये आपका जो है सबस्ट्रेट है जो कि क्रिस्टल भी हो सकता है, ग्लास, रेजन या मेटल है, और ये उसके ऊपर जो आपकी इवेपोरेशन थिन फिल्म जो है वो डेवलप हो रही है. एंड नाउ रेजिस्टिव हीटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीट. क्लियर? पल्स लेजर डेपोजिशन PLD, जैसा कि इसमें आप पल्स जो है लेजर डेपोजिशन के, इसमें लेजर जो है वो यूज की जाएगी टारगेट के ऊपर, उसमें से वो एटम्स को निकालने के लिए जो हमने सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट करने हैं. इन विच अ हाई पावर लेजर ablates मटेरियल from the target into a vapor. High power laser is used for deposition. Argon or neon is used for inert atmosphere. High vacuum is formed. Laser is focused by lens. Target decide the position of the deposition. फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये फोकसिंग लेंस हैं, ये लेजर बीम है, ये आपका उसको फोकस करता है और ये आपका टारगेट. यहाँ से फिर क्या होगा, आपका एक प्लाज्मा प्लूम निकलेगा और वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा. नीचे वाली डायग्राम जो है इसमें आपका यहाँ पे सेम ये लेजर है, ये आपका जो उसमें लेंस है, ये लेंस क्या उसको टारगेट के ऊपर एक पोजीशन के ऊपर लेके जा, स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे और वहां से आपके जो एटम्स हैं वो टारगेट से निकलेंगे और ये आपकी जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर आके डिपॉजिट होंगे एटम बाय एटम एक लेयर के अंदर. और ये जो आपकी सबस्ट्रेट है इसको सपोर्ट किया गया है SiC हीटर में, सिलिकॉन कार्बाइड हीटर पे. और यहाँ पे जो आपका टारगेट है ये रोटेटिंग डिस्क के तौर पे है कि ये मूव करता रहता है, कंज्यूम होगा कांस्टेंट.
ये सिंपल सा प्रोसेस फॉर पल्स लेज़र डेपोजिशन। ये लेज़र है, एक होल में से आपके टारगेट के ऊपर पे जा रहा है और टारगेट के नीचे आपका जो सबस्ट्रेट है उसको सपोर्ट किया गया एक हीटर के ऊपर, और जैसे ही लेज़र टारगेट के ऊपर टकराएगी, डलेगी, उसमें से एक प्लूम जो है वो आपका सबस्ट्रेट के ऊपर आएगा और वो डेपोजिशन की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? Now next is sputter deposition, in which a glow plasma discharge, usually localized around the target by a magnet, bombards the material, sputtering some away as a vapor. Sputtering works on the basis of momentum principle formed by the collision of the atom and molecules. Plasma glow ion accelerator or radioactive emitting is used to evaporate material. Here argon gas is used for inert atmosphere. जैसे कि ये आपके सामने डायग्राम में है, ये टारगेट है आपका, ये आपके पास आर्गन गैस है और यहाँ से आपके टारगेट के जो मेटल्स हैं, एटम्स हैं वो निकल रही हैं और ये आपकी सबस्ट्रेट, इसके ऊपर ये रेड कलर की जो कोटिंग है वो आपके पास आ जाएगी। वैक्यूम सेम इसमें क्रिएट किया जाता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पटरिंग, केमिकल एंड ईचिंग स्पटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पटरिंग एंड लास्ट वन पोटेंशियल स्पटरिंग। Advantages of PVD coatings. PVD coatings are deposited for numerous reasons. Some of the main ones are improved hardness and wear resistance, reduced friction, improved oxidation resistance. The use of such coatings is aimed at improving efficiency through improved performance and longer component life. They may also allow coated components to operate in environments that the uncoated component would not otherwise have been able to perform. PVD coatings are harder and more corrosion resistant than coatings applied by the electroplating process. Coatings have high temperature and good impact strength, excellent abrasion resistance, and are so durable. More than one technique can be used to deposit a given film. Material can be deposited with improved properties compared to the substrate material. Almost any type of inorganic material can be used as well as some kind of organic materials. The process is more environment friendly than processes such as electroplating. And now, disadvantages of PVD coatings. PVD needs high capital cost. It is a line of sight technique, meaning that it is extremely difficult to coat undercuts and similar surface features. The rate of coating deposition is usually quite slow. Processes requiring large amount of heat require appropriate cooling systems.
Some processes operate at high vacuums and temperatures requiring skilled operators. These are the advantages and disadvantages of PVD coating. Now, applications of PVD coatings. These are generally used to improve hardness, wear resistance, oxidation resistance. Thus, such coatings used in a wide range of applications such as aerospace, automotive, surgical or medical, dyes and molds for all manner of material processing, cutting tools, firearms 2929. What is firearm? It is a portable gun, a barreled weapon that launches one or more projectiles, often driven by the action of an explosive force. Now, this is the assignment, student. What is deposition? Explain pulse, laser and electron beam physical vapor deposition with the help of diagrams. Dear student, if you have any question, you can send me your question at my email ID maslamchemist@hotmail.com. Thank you so much. Allah Hafiz.